go there. Hello. 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 Good morning, Parishud Joshi. Good morning, students. Please tell me voice is clear, screen is clear. Please ensure to me voice is clear. Okay. So good morning, students, to all of you. Students, nowadays we are facing the connectivity problem. So the connection is interrupt in between the class. So sorry for this type of inconvenience. If connectivity problem is proper, then class will be proper. Okay, it is the technical problem. So students, please cooperate to us. Okay, so now today topic is about the reflection of light. Last chapter is heat is completed. The second part, B part or C part of 6th chapter, B part or C part, it is deleted. Okay, only global warming, the basic ideas about the global warming in your syllabus, and about the global warming you know very well what is the global warming. Okay, so students, that's why I am starting today the new chapter, which is the reflections of light. So now students, question is arise, what is the reflections? So please notice here, suppose this is a surface, this is on this surface like this way. Okay, a light is coming from here and strike on this surface, then what will be happen? The some part of the light is absorbed by the surface, some part of the light is transmitted from this surface, and some part of the light is reflected on the same medium. Okay, what I say here, some part of the light is absorbed by the surface, some part, okay, suppose this is the surface, transparent surface ले लो चलो, for example के लिए transparent या semi transparent surface ले लो, तो light is striking on the surface, तो some part of the light is absorbed by the surface and some part of the light is transmitted from this surface, means यहाँ से transmit होके दूसरी तरफ चले जाएगी. Okay, and some part of the light is just reflect on the same way. Okay, same way कैसे बोल रहा हूँ, if light is coming from here तो it will be reflect here. Okay, तो same way means just above, ये इसका एक साइड है, ये इसका दूसरा साइड है रिफ्लेक्टेड सरफेस का. ओके, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग द रिफ्लेक्टेड ऑन द सेम वे. ओके, सेम मीडियम बोल सकते हैं. ओके,
हाँ, तो स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, हाउ कैन वी डिफाइन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, समथिंग मोस्ट ऑफ द, ओके, buffering. Students, please check your connections. From our side the connection is proper here and voice also clear. Please check your connection. So reflections now, students, reflections, when the light ray is striking on the surface, then it will be written on the same medium. तो this phenomena is known as the reflection of light. जब भी लाइट क्या होती है, किसी स्मूथ सरफेस पे स्ट्राइक होती है तो क्या हो जाती है, उसी मीडियम में वापस चली जाती है ऐसे. ओके, इस मीडियम में, मीडियम क्या है, एयर है. मीडियम क्या है, एयर है. मीडियम किसको बोलेंगे, मीडियम मींस एयर हो गया, वाटर हो गया, जिससे वो लाइट पास आउट हो रही है. वहां पे मीडियम क्या है, जैसे यहाँ पे इस रूम में मीडियम क्या है, एयर है, तो हम मीडियम एयर की बात कर रहे हैं. So light is coming from medium, this medium, and also stacking, after stacking this surface it will be reflect, bounce back. रिफ्लेक्ट को हम बोल सकते हैं बाउंस बैक, जैसे बॉल बाउंस करती है ना, ऐसी बाउंस बैक ऑन द सेम मीडियम. तो दिस फिनोमिना इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके, चलिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को अंडरस्टैंड हमने कर दिया है. सो स्टूडेंट्स, अब क्या होगा यहाँ पे, reflection of light is depend on the property of the surface. कैसे, if the surface is smooth, totally smooth, if the surface is totally smooth, surface है पूरा, then the reflection is regular reflection. अभी बात करूंगा रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है. ओके, एंड इफ द सरफेस इज इरेगुलर मींस रफ सरफेस है, तो देन द लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग इट विल बी बाउंस बैक इन द डिफरेंट डायरेक्शंस. अलग अलग डायरेक्शन में चले जाएगा. तो मैं यहाँ पे अलग अलग डायग्राम प्लॉट कर रहा हूँ इसको समझाने के लिए. तो दिस इज अ सरफेस, दिस इज स्मूथ सरफेस एंड दिस इज रफ सरफेस. ये रफ सरफेस है कोई. ओके, तो चलिए लाइट इस पे स्ट्राइक हुई ऐसे, तो जब स्ट्राइक होती है तो मैं ए बीम ऑफ लाइट कंसीडर कर रहा हूं. मतलब ए बीम ऑफ लाइट मींस एक बंच ऑफ लाइट, एक बहुत सारा, ठीक है, ऐसे ए बल्क ऑफ लाइट. तो अब होगा क्या, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द रेगुलर रिफ्लेक्शन, तो इन द केस ऑफ द रेगुलर रिफ्लेक्शंस, if light is parallel here, if the light is incidence in parallel way, तो after the reflection it also goes to parallel like this way, ऐसे और ऐसे. ये हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन. ओके, दिस इज द रेगुलर रिफ्लेक्शन. ओके, बिकॉज द लाइट इंसिडेंस रे इज पैरेलल एंड रिफ्लेक्टेड रे आल्सो पैरेलल. रिफ्लेक्टेड रे मींस जो रे वापस जा रही है, ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है. तो दिस टाइप ऑफ द रिफ्लेक्शन इज नोन एज द regular reflection. This is the regular reflection. Okay, and what is the irregular reflection? Irregular reflection is light is incidence in parallel way. Okay, a beam of light is striking on the surface, this rough surface, and after the reflections it will be just bounce back in the different directions. Suppose the light is go like this way, this light, and this light is go like this way. Okay, this light is go like this way. So here the direction is different. So this type of reflection is known as the irregular reflections. Irregular हो रहा है, आने का जो टर्म है वो तो पैरेलल है, बट जाने का क्या है, पैरेलल नहीं है, वो इरेगुलर, अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है. तो ये है, दिस इज द जनरल आइडिया अबाउट द रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन. इज इट क्लियर? प्लीज टेल मी, इज इट क्लियर? यस सर. ओके, गुड. चलिए, सो स्टूडेंट्स, इन ठीक है, इन इरेगुलर रिफ्लेक्शंस व्हेन द लाइट इज बाउंस बैक, तो इट विल बी स्प्रेड इन द डिफरेंट डायरेक्शंस. ओके, एंड फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शंस ए light is enter in our eyes, and that's why we are unable to see the different object around us. समझ रहे हो ना क्या बोल रहा है, कि इरेगुलर जब रिफ्लेक्शन होता है
तो उसकी वजह से क्या होता है, अलग अलग डायरेक्शन से जो लाइट होती है वो हमारी आईज में क्या हो रही है, इंसिडेंस हो रही है। ओके, अब क्या हो रहा है, जब अलग अलग डायरेक्शन से क्या होती है, जो लाइट हमारी आंखों में इंसिडेंस हो रही है, तो उसकी वजह से हमारी जो चारों तरफ जो चीजें रखी हुई है, हमने जो चीजें रखी हुई है उसको हम देख पाते हैं। किसकी वजह से, दिस इरेगुलर रिफ्लेक्शंस। ओके, अंडरस्टैंड। इन रेगुलर रिफ्लेक्शंस, यहां पर तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या चल रही है, लाइटें चल रही है पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो हम एक सर्टेन एंगल से अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन कहीं पे हो रहा है तो सर्टेन एंगल से हम उस चीज को देख सकते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उस चीज को देख सकते हैं। ओके, बट इफ देयर इज ए इरेगुलर रिफ्लेक्शंस देन वी कैन सी द ऑल द थिंग्स अराउंड अस, वी आर इनेबल टू सी ऑल द ऑब्जेक्ट अराउंड अस। अंडरस्टैंड व्हाट इज द यूज ऑफ, ठीक है, व्हाट इज द एप्लीकेशन बोल सकते हैं इसको, ऑफ द रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इतना समझ में आ गया है, जल्दी बताओ। ओके, गुड। चलिए, नाउ स्टूडेंट्स, आफ्टर द रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शंस, सम टर्म्स रिलेटेड टू द रिफ्लेक्शंस। Some terms related to reflection, to reflections. Okay, the first terms is incidence ray, incident ray, incident ray. Okay, what is the incident ray? So students, incident ray means this is the surface, a smooth surface. A light is coming, a light is striking on this surface. Okay, the incidence, this is the incidence ray, the light which is strike on the surface, the light which is strike on the surface is known as the incident ray. This is the incident ray. Okay, इसको हम बोलेंगे incident ray, incident ray. Understand? Okay, next one is reflected ray, reflected ray. So reflected ray, what is the reflected ray? After striking the light, it will be bounce back on the same way, ऐसे same medium, way तो नहीं बोल सकते, same medium. Okay, ये क्या हो गया, same medium में reflected हो गया, तो this is the reflected ray, reflected ray. Okay, now next one, point of incidence, point of incidence, point of incidence. So point of incidence means a light is striking on the surface, so the point on which the light is strike is known as the incident point. This is the point of incidence. Okay, point of incidence, incidence, point of incidence, जहां पे लाइट स्ट्राइक हुई है उसको बोलेंगे point of incidence. Next, 4 terms. Normal, what is the normal? So normal, it is the imaginary line, it is the imaginary line which is drawn perpendicular to the surface. इस surface के perpendicular जो line मैंने imaginary line यहाँ पे draw कर दी है, that is called the normal. Okay, so this is the normal, this is the normal of the surface. So generally normal is the perpendicular line to the surface, any surface. Okay, this is normal. Now next terms, 5th terms, angle of incidence, angle of incidence, angle of incidence. So what is the angle of incidence? Angle of incidence, so the angle between the normal and incident ray, the angle between the this normal and incident ray is known as the angle of incidence. I से इसको represent करेंगे. Next one, 6th, angle of reflected, angle of reflection, angle of reflection. So angle of reflection, what is the angle of reflections? So the angle between the normal and the reflected ray is called the angle of reflection. R से represent करेंगे. Okay, angle I for incidence angle, R for reflected angle. Is it clear? यहां तक समझ में आ गया? एंगल बिटवीन नॉर्मल रे एंड इंसिडेंट रे. यस अंशिका, ओके, ठीक है सर. तो ऑलवेज प्लीज नोटिस हियर दैट इफ आई टॉक अबाउट द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो वी ऑलवेज मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम नॉर्मल टू इंसिडेंट रे, नॉर्मल से इंसिडेंट रे की तरफ हम मेजर करेंगे.
तो that is called the angle of incident. Angle of same as the angle of reflection we measure from this normal. इसलिए मैं यहाँ पे इस नॉर्मल लाइन को क्या कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ. ओके, इतना क्लियर हो गया हुआ. नेक्स्ट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. Laws of reflection. Laws of reflection. What is the laws of reflections? So students, there are the two laws of the reflections. The first one is angle of incidence. Angle of incidence is equal to angle of reflection. Angle of incidence is equal to angle of reflection. So angle of I is equal to angle of R. ये हो जाएगा first law of reflection. Second law, angle of incident, not angle, yes, ray की बात करेंगे. Angle of incident, यह नहीं, not angle, sorry, incident ray. Next is normal, and third one is reflected ray. Incident ray, normal ray and reflected ray all are lie on the same surface, same plane. ठीक है, ये सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं. Is it clear? तो this is the basic terms about the reflection. This is the basic terms about the reflections. I think you understand this one. Okay, चलिए आगे चलते हैं, further discuss करते हैं. Now students, there is a conditions if, okay, देखना नोटिस करना है. if here देखना क्या होगा, if angle of I is equal to 30 डिग्री. अगर 30 डिग्री पे इस नॉर्मल से 30 डिग्री पे कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्शन भी कितने पे होगा, 30 डिग्री पे होगा. इसलिए यहां पे बोला गया एंगल ऑफ I इक्वल्स टू एंगल ऑफ R. तो अगर ये 30 एंगल होगा तो ये भी 30 होगा, अगर ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा. ओके, बराबर चलेगा. But students, there is a case if the angle of I is equal to 0. Angle of I is equal to 0. So angle of I is equal to 0 means the light is incident perpendicular to the surface. The light is incidence perpendicular to the surface. So in this case, sorry. So in this case, what will be happen if the light is incidence perpendicular to the surface? This is the normal, okay, and the light is coming from here, okay, like this way, and it is strike this to the surface perpendicularly. तो angle of I is equal to 0. Angle of I कितना बना दिया मैंने, 0. Angle of I 0 क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि angle of I को हम कहां से कैलकुलेट करते हैं, इस नॉर्मल से. तो इस नॉर्मल के ऊपर दिस इज द कौन क्या बोल सकते हैं, कोइंसाइड लाइन. ओके, एक ही साथ एक ही लाइन में आ गई है, कोलिनियर बोल सकते हैं. ओके, तो स्टूडेंट्स द एंगल इज इक्वल टू 0, I इक्वल टू 0. इफ I इक्वल टू 0 देन R विल बी 0 हो जाएगा ना, R विल बी 0 अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ. इफ I इक्वल टू 0 देन R विल बी 0. तो इफ द लाइट इज इंसिडेंस परपेंडिकुलर टू द सरफेस, द लाइट इज बाउंस बैक द सेम वे एंड इट विल बी रिफ्लेक्ट परपेंडिकुलरली. ठीक है, परपेंडिकुलरली क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी. तो ये हो गया है एंगल ऑफ I इज 0, एंगल ऑफ R आल्सो 0, दोनों 0 हो गया. I और R क्या हो गया है, 0 हो गया. ओके, इज इट क्लियर? मैंने 3 पढ़ा नहीं. चलिए, गुड. So students, now I am ending this session. Tomorrow we will be not tomorrow. Now 3 days. There is a 3 days. Thursday, Friday, and Saturday. Okay, for physics terms. So we will be meet after 1 week. 1 week आएगा? No, after 3 days. Okay, 3 days. So if Monday is possible, then I will take the class on Monday. Otherwise, on Thursday. Okay. So thank you for watching this video. Thank you very much.